अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, हम हर टॉपिक पे 3 तरीके से वीडियो तैयार करेंगे। पहले मरहले में हम किसी भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंडोर्समेंट क्लॉज को इंग्लिश ज़बान में पढ़ेंगे ताकि किसी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से पढ़ने का अंदाज वाज़िया हो सके। ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट इंग्लिश में अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में इन तमाम वीडियोस का उर्दू वर्जन तैयार किया जाएगा और ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट उर्दू में अपलोड कर दिए जाएंगे। आखिरी मरहले में इन तमाम टॉपिक्स को तफसीलन डिस्कस किया जाएगा और ये वीडियो हर टॉपिक की मुताल्लिका प्लेलिस्ट में अपलोड किए जाएंगे। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Bank mortgage clause. Attached to informing part of the policy number, it is hereby declared and agreed that Clause 1 Subclause A1. Upon any monies becoming payable under this policy, the same shall be paid by the company to the bank in such part of any moneys so paid as may relate to the interest of other parties insured hereunder shall be received by the bank as agent for such other parties. However, in the event of an admissible claim under this policy, the company's liability, in no circumstance, shall exceed the amount of loss or damage assessed within the terms and conditions thereof or sum insured, whichever is less. Clause 1 Subclause A. 2. The receipts of the bank shall be a complete discharge of the company therefore and shall be binding on all parties insured hereunder. Clause 1 Subclause A3. If and whenever any notice shall be required to be given or other communication shall be required to be made by the company to the insured or any of them in any matter arising under or in connection with this policy, such notice or other communication shall be deemed to have been sufficiently given or made if given or made to the bank. Clause 1 Subclause A4. Any adjustment, settlement, compromise or reference to arbitration in connection with any dispute between the company and the insured or any of them arising under or in connection with this policy if made by the bank shall be valid and binding on all parties insured hereunder, but not so as to impair the right of the bank to recover the full assessed amount of the claim if may have on other parties insured hereunder, and further that in no event the liability of insurer exceeds the sum insured or the settled amount of loss whichever is less. Clause 1 Subclause B. This insurance shall not be invalidated by any act or omission on the part of any other party insured hereunder, whereby the risk is increased or by anything being done to upon or in any building hereby insured or any building in which the goods insured under the policy are stored without the knowledge of the bank, provided always that the bank shall notify the company of any change of ownership or alteration or increase of hazard not permitted by this insurance as soon as the same shall come to its knowledge, and shall on demand pay to the company the necessary additional premium from the time when such increase of risk first took place.
However, if the loss occurs prior to intimation of this incident, change to the insurers by the bank, the liability of the insurer in respect of this loss shall not exceed beyond what it would have been had this incident, change not taken place. Therefore it is the utmost responsibility of all insured parties including the banks to notify immediately any and all material changes taking place in the subject matter insured during the currency of the policy to the insurer. जी नाजरीन, इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को आपके लिए पढ़ा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को सही तौर पे पढ़ पाएँ तो मजमून पे हमारी गिरफ्त काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। इस वीडियो का मकसद लोगों के लिए इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को सही तौर पे पढ़ने और समझने में सहूलत पैदा करना है। अगले मरहले में इन डॉक्यूमेंट्स का उर्दू तर्जमा आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। उम्मीद है आप हमें अपनी राय से आगाह करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर इंश्योरेंस की तमाम पॉलिसी एंडोर्समेंट क्लॉजेस को आसान इंग्लिश और उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमको आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।